Assalamu alaikum dear students. Today is 23rd of August 2020. This is class 6, subject general English. Topic grammar work. We have completed the language work portion. Today we are going to discuss the grammar work. The first part of the grammar work is, let's have a look over the book. You have already learned something about simple past tense. You knew we use simple past tense to talk about actions, as in she made plants, birds and animals which looked very real. In this sentence, made and looked are the past forms of make and look. These verbs usually end in ed. Some verbs do not take ed. Such verbs are called irregular verbs. Study the following verbs given in the example. यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट का जहाँ तक ताल्लुक है ग्रामर वर्क का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर ये जो राइटर है ये हमें दो चीज़ें सिखाता है, सिखाने की कोशिश करता है. टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ये हमें दो तरह के वर्ब्स सिखाना चाहता है, क्योंकि हमें पहले ही पता है वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड्स, द वर्ड्स दैट शो सम एक्शन, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. मिसाल प्ले, टॉक, ईट, राइट, रन, jump. So these all are doing words. We can say that these are verbs. Now we know that every verb has so many forms: present form, past form, past participle form. So every verb has its conjugative forms. We can conjugate the verbs. Now according to conjugation, on the basis of conjugation we have two types of verbs. Number one is regular verb and second one is irregular verb. First one is regular verb, second one is irregular verb. क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे आँखों के सामने बहुत सारे ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनको पास्ट फॉर्म बनाने के लिए या पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमें या तो डी ऐड करना पड़ता है या ईडी ऐड करना पड़ता है एट द एंड ऑफ वर्ब्स. गो हम ये कहेंगे कि एक किस्म वर्ब्स का ऐसा है जिनको हमें कंजुगेशन करते वक्त या जिनको हमें पास्ट फॉर्म बनाते वक्त या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते वक्त या तो हमें डी ऐड करना पड़ता है या ईडी ऐड करना पड़ता है. मिसाल रोल, वर्ब हमारी है रोल, ROLL रोल, इसकी पास्ट फॉर्म हमें बनाई है ROLLED, यानी हमने ईडी ऐड किया है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी हमने ईडी ऐड किया है. इसी तरह है बुक, BOO के बुक, बुकड, BOO के ईडी, यानी हमने ईडी ऐड किया है. यहाँ पर भी हमने ईडी ऐड किया है. इसी तरह है प्ले, प्लेड, तो हमने यहाँ पर ईडी ऐड किया है, हमने यहाँ पर ईडी ऐड किया है. इसी तरह है लुक, लुकड, लुकड. सो हम ये ऐसी वर्ब्स है जिनको पास्ट फॉर्म बनाते वक्त या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते वक्त हमें या
डी ऐड करना पड़ता है या ईडी ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स, जो कि रेगुलर मीन्स जो आम तौर इस्तेमाल होता है। आम तौर पर हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं कि हम लास्ट पे वर्ब के आखिर पे हम ईडी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो पास्ट फॉर्म में आता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है। लेकिन अब दूसरा किस्म है इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब मीन्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, क्योंकि यूजुअली हम यह करते हैं, लेकिन बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनको हमें पास्ट फॉर्म बनाते वक्त या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते वक्त हमें ईडी या डी ऐड नहीं करना पड़ता है। तो इनको हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स। सो दीज आर रेगुलर वर्ब्स and these are irregular verbs. Regular means where we add d or ed at the to the base verb, and irregular means where we do not add d or ed to the base verb to make past form or past participle form. So this second type is called irregular verb where d or ed is not added, and first one is called regular verb where d or ed is added. مےٚ باسان تۄہہِ اوس سمجھ یِتھے مثال کے طور میڈ میک میڈ میڈ چھُنہ پیڈ پے پیڈ پیڈ. یہاں ہم لکھیں گے یہ دوسرا، اس کو ہم ابھی نہیں دیکھیں گے. گو یہ ریگولر ورب ہے، پہلا والا ریگولر ورب ہے، دوسرا ہے اریگولر ورب. اسی طرح اگر ہم اب بک کی طرف دیکھیں گے، بک میں ہمارا جو کوشچن ہے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 وربز دی گئی ہے. اگر ہم ان کے پاسٹ فارم کی طرف دیکھیں گے یا پاسٹ پارٹیسپل فارم کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پر ہم ڈی یا ای ڈی نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ کون سی وربز پھر کہلائی جائیں گے؟ یہ پھر اریگولر وربز کہلائی جائیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ نارمل پیٹرن سے ہٹ کے ہے، یعنی یہاں پر ای لاسٹ پہ ای ڈی یا ڈی ایڈ نہیں ہوا ہے. تو یہ سو دیز آل آر اریگولر وربز. مثال ٹیچ ٹاٹ ٹاٹ، کم کیم کم، ہیئر ہرڈ ہرڈ، نو نیو نون، سی سا seen, bring brought brought, fly flew flown. So these all are examples of irregular verbs because they are different from the normal pattern, they are different from the usual pattern. In usual pattern or there we add d or ed, but here neither d is added nor ed is added. So this is some thing different from the usual pattern. So that is why these are called irregular verbs. So 1 2 3 4 5 6 7. So these are 7 in numbers. These are 7 in number. So now find some more irregular verbs and write their conjugation. اب ہمیں خود ہی اور irregular verbs ڈھونڈنی ہے، ریگولر نہیں بلکہ ہمیں اریگولر وربز 5-8 ڈھونڈنی ہے، پھر ہمیں ان کی بھی کنجوگیشن کرنی ہے. مثال کے طور پر گو، وینٹ، گون، گو وینٹ گون. اسی طرح آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو. تو آف یہ ہمیں 7 ہے، میں نے ایک اور لکھی ہو گئی 8، تو آپ 5 اور لکھ کے لانا. 5 more irregular verbs in addition to these 7 and this one which is written by me. So these are, along with this one there are total 8, 7 from the book and 1 from mine.
In addition to these 8, you can write 5 more irregular verbs and also write their conjugation. Conjugation means also write their 3 forms. I think this is sufficient for today. Have a nice day. Shukriya. Khuda Hafiz.